Welcome again. That is the question of wave equation. A string is stretched between two fixed points at a distance L apart. Solution. देखिए कोई स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रेच between 2 points P be any point on the string, coordinate x, y, x and y, x axis A. Length L. The length of the string is L. Motion is started by displacing the string in the form of y equals to a sin pi x upon L, from which it is released at time t equals to 0. Let OA be an elastic string of length L. राइट स्टूडेंट्स, ये ओ एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, 2 पॉइंट्स O और एक बीच स्ट्रेच कर दी गई है, स्ट्रेच्ड बिटवीन O एंड A. For small vibration, initial BFS, initial basic conditions, use y0t equals to 0, ylt equals to 0, 1, 2 and yx0 at time t equals to 0, a sin pi x upon L, that is 3, and velocity del y upon del t, initial velocity 0 at t equals to 0. 4. तो ये बाउंड्री कंडीशंस हैं जो क्वेश्चन में दी हुई हैं. वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर वाई. whose solution y equals to c1 cos kx c2 sin kx c3 cos ct c4 sin ct. Equation number 5. Putting y, that is yxt, y0t, c1 x equals to 0, cos 0 1, sin 0 0, c2 c3 cos ct, c4 sin ct equals to 0 और c1 equals to 0. Equation number 5. yxt equals to
C2 sin kx, C3 cos ckT, C4 sin ckT. Equation number 6. And YLT, C2 sin KL, C3 cos ckT, C4 sin ckT equals to 0, sin KL equals to 0 और equals to sin n pi, KL equals to n pi और k equals to n pi upon L. ये वैल्यूज k की इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे. इक्वेशन 6 yxt equals to C2 C3 cos n pi c t upon L, C2 C4 sin n pi c t upon L, sin n pi x upon L. That is equation number 7. yxt equals to sigma n equals to 1 to n yn xt equals to 1 to infinity Cn cos n pi c t upon L dn sin n pi c t upon L sin n pi x upon L. 8. Differentiating del y upon del t n equals to 1 to infinity Cn sin n pi c t upon L, n pi c upon L sin n pi c t upon L plus dn n pi c upon L cos n pi c t upon L sin n pi x upon L. Del y upon del t equals to 0 dn n equals to 1 to infinity dn n pi c upon L cos n sin n pi x upon L equals to 0 और dn इक्वल्स टू 0. ये dn की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 में शिफ्ट करेंगे. yxt इक्वल्स टू yxt इक्वल्स टू सिग्मा Cn cos n pi c t upon L sin n pi x upon L. That is equation number 9. yx0
putting t tends to 0. Then yx0 equals to Cn sin n pi x upon L equals to, putting t equals to 0 in equation number 9, cos 0 1 sin n pi x upon L yx0 in the boundary condition is value a sin pi x upon L. C1 sin pi x upon L equals to a sin pi x upon L, और a equals to C1 equals to a. Equation 9, yxt equals to a cos pi ct upon L sin pi x upon L. That is the proof of this question.